आज हमें देखो कौन सा मिशन मिलता है भाइयों। चलते हैं यारो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर लेना। तो भाइयों आज हमें देखना है भाई क्या करना है। अगली बार तो यार क्या करना था मैं भूल चुका हूँ। तुम खुद जाके देख लेना। हाँ हाँ, हमने कुछ कैदी पकड़े थे, कैदी कैदी मतलब गैंग मेंबर को मारा था। अब देखो आज क्या करना है। चलो अब कमरे से बाहर निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं। वो निगर टू वेस्ट द डब्लू कैन फाउंड द कोला स्प्रिंग। कुछ तो हमें डब्लू है, उधर तक पहुंचना है। ये हसीना, अरे जाओ यार, तुम हमें से कोई मतलब नहीं है, हम बस अपने रास्ते पे हैं। ये कौन चिल्ला रहा है बे? बहनचोद कौन चिल्ला रहा है? ये भड़वा देखो बहनचोद लड़की छेड़ रहा है। मादर चोद। रुक 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 2 सेकंड। हट भोसड़ी के। ओए लौंडिया भी मर गई। तेरी माँ की चूत। भाई मैं मदद कर रहा था, वो लौंडिया भी टपक गई। निकलो यार यहाँ से। भाई वो लड़की भी मर गई। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी भाई, कसम से। बहनचोद देख लफड़ा मोल ले लिया यार, वांटेड का पोस्टर ना लग जाए मुझ पे। बहनचोद मैं मदद कर रहा था सीरियसली भाई उस लड़की की। भाई इसको गोली लग गई। मादर चोद। भाई करने भला गया तो बहनचोद वो बेचारी को मार के आ गया यार। वाहियात किस्मत बहनचोद, क्या है बोलूँ मैं। चलो जल्दी चलते भाई, डब्लू है तो हम शॉर्टकट लेते हैं भाई। खेतों के बीच से निकल रहे हैं, जंगल उस। डब्लू इधर है, इधर इधर है। पता नहीं भाई रास्ते से जाना आसान हो गया, यहाँ से जाना। खैर जल्दी से सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हो तो। भाई अदल तो बेंच गफला हो गया। चलो वांटेड का पोस्टर हमें नहीं लगा तो अच्छी बात है। और ये बेंच कितना दूर है? पहुँच गए शायद। ओए ओए ओए, यहाँ तो कुछ है। Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? Head for Armadillo, friend. भाई एक बुड्ढा है, शायद उसको गोली वोली लगी कुछ तो। पर भाई हमें इसे लेके जाना, जहाँ से हम आएंगे वहाँ से इसे What पहुँचाना is your है। name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse How me. many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard twins, Walton's gang. I know who you are. Word sure travels fast around here. My God! They've come back to finish me off! ये मादर चोद, भाई क्या हो रहा? गोली क्यों चला रहे बड़े व्यक्तियों पे? भाई वो बुड्ढे को मदद कर रहा हूँ भाई की। Out! I throw you to pieces, the ये outlaw! मादर चोद गोली क्यों चला रहे? भाई भागो 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 जल्दी यार। भाई दो बुड्ढे हैं, शायद गैंगस्टर है, शायद ये बुड्ढे को मारने आए हैं। तो बच्चे बच्चे जिंदा क्यों छोड़ा था भड़वो? मेरा इंतजार करने के लिए। खैर भागते आ जल्दी से, बुड्ढे को पहुंचाते हैं। दो ही है तो शाम भाई आराम से निकल जाएंगे। ये खाली Definitely won't make it. ठीक है। ए मादर चोद, ये आगे कैसे पहुंचा? ये शॉर्टकट मारा है, शॉर्टकट मारा है भड़वो ने। ये भोसड़ी की कहाँ है, कहाँ? ये मादर चोद, ये 2 से ज़्यादा है भाई, 4-5 है। ये जो किसी को मारूंगा भाई।
John, माता look चल रुक जा alive, बे। will you? देखो तो अरे यार That's red coming for निशाना you. नहीं लग रहा यार Just concentrate. Is that armadillo? भाई। Come on, hurry! बच जा, एक मारा एक मारा। बस एक लगी गोली लगी उसको, एक मारना और है। अरे यार हट हो। Fine work. बचा तू बचा। Fine work. I'm not हट your माता goddamn चो। driver. Get a hold of मजे कर yourself. जाके। They're इसे भी fleeing. मार We दिया must हमने get you और हम close to पहुंच भी town गए and भाई। run 'em. Yeah, I देखते क्या embrace होता है you. अब। This is it. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. हमने उसे पहुंचा दिया भाई इसके अड्डे पे, डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, अड्डे पे नहीं। देखते हैं हमें अब क्या करना है। सबसे पहले तो भाई अपना गेम सेव करने जाएंगे हम। हमें $100 मिले, ठीक है। चलते हैं भाई यहीं, क्योंकि हमने भाई गेम सेव कर लेते ताकि हमें दोबारा मिशन कंप्लीट ना करना पड़े। जो मैंने जो गोली मारी थी उसके भीड़ तो नहीं है ना ये? वो दोनों लाशें कहाँ गई भाई? काफ़ी अजीब है। हमें जा यार, हैंडसम हैंडसम करके चढ़ाओ मत। My mistake. गलती से मिस्टेक हो गई। चलो पहुंचते हैं भाई, अपना कमरा ये रहा प्यारा सा। यहीं पे गेम सेव कर लेंगे हम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है। जल्दी जल्दी से, थक वक गए भाई हम तो। सेव सेव कर ले भाई जल्दी से। और आगे बढ़ते हैं हम, देखते क्या मिशन अब हमें मिलने वाला है दोबारा से। चलो चलो चलो। ए भैंचो दरवाजा पर अटक गया मैं। भागो। चलो चलो चलो। और कहाँ? Easy there, lady. अरे आराम से भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? अब भाई अगला मिशन हमारा कौन सा है भाई, देखना होगा वो। भागो जल्दी, भाग के चिक्की करेंगे भाई। Forgive me, sir. I'm happy to scrap with you. भाई मैं बुढ़े घोड़े को बुला रहा हूँ अपने, तू काहे के दर कर चल रहा है? ये मेरा लाडला आ गया, आ गया मेरा कल्लू कालिया। अब कहाँ जाना है भाई हमको? ये बेंचोद घोड़े सवारी कितने सारे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। गोली कहाँ चल रही है? बेंचोद हम निकलते हैं भाई, इधर पहुंचना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखते क्या होना है अब। And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens, Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John.
ठीक है भाई, हमें इसका पीछा करना है। ठीक है, चलो आगे अंकल, तभी हम आगे तुम्हारे पीछे पीछे आ पाएंगे। ये चल क्यों नहीं रहा है भड़वा? ए बेटी चोद बुढ़ऊ साले, साले मुझको ही भाई ये अपना नौकर बना लिया भाई इसने। हमें किसी फार्म पे जाना है। ओके, भागते भाई जल्दी I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed You're scuttlebutt. as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. They are on the road! They're going to destroy the merchandise! My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine metal in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. And I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you. A fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. The bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the cloud that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. Best you light here, dear boy, so no one sees us arriving together. See you shortly, and remember, showmanship. इतना मादर चोद बुड्ढा है भाई, साला हमें छोड़ के भाग गया अभी आधे रास्ते लाके। शुक्र करो हमने घोड़ा साथ में मंगा लिया था, वरना बेंचो दिया हम कितनी देर तक इंतजार करना पड़ता। भोसड़ी का बुड्ढा साला, एक नंबर का हरामी है मादर चोद भाई। यहाँ छोड़ कर भाग गया भाई, जितना इतना लाया तो उधर तक भी हमें सवारी दे देता। बेंचो एकदम पास में ही छोड़ दिया हरामजादा। You will not regret it. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so.
That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. भाई जो स्कल टंगा है ना हमने दिखा था उस पे भाई निशाना लगाना है ताकि इनको भाई अपनी कलाकारी दिखानी है हमको ये गया The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. Westick's own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. सड़ी के तेरे सामने स्कल को मारा Let's था just see मैंने how sharp you is with a moving target. ठीक है Here it comes. अबे फेंक भी You're more crooked than a snake in a... गया Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare मुकाबला करेगा your भाई हाथ display हाथ of Herculean से आजा brawn. ना बड़ी के बहुत मार रहा था आजा ये लो You mess with me. फालतू में पंगा ले रहा था There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get This him. ends now. Watch out, he's got a gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. साले अपने औकात से बात नहीं आ रहा है बंदा मजा आया Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey! Where are you going? इन चूतियों के पार्टी से मैं निकल रहा हूँ भाई ये भड़ गए हैं साले एक नंबर पे No harm in trying one घोड़ा bottle, लेके I भाग suppose. जाऊंगा पक्का देख लेना Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. निकलते हैं भाई